एंड उनने फर्स्ट रेफरल दिया मुझे एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन First फर्स्ट interview. अटेम्प्ट में मैं सेलेक्ट हुआ Oh था. my goodness. So it was amazing, right? Yeah, And it you won't sounds believe, amazing. So yeah, it absolutely you feels won't amazing. believe कि माइक्रोसॉफ्ट में तो मुझे कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं गई. How their resume will get shortlisted in a company like Google. You are in a lead position. So what kind of role you will be hiring, especially under you as a lead, DSA and system design. DSA के लिए what I know is lit code and or code basics something. They can practice few problems. But system design मेरे knowledge के हिसाब से I don't know कि ऐसा कुछ वेबसाइट है कि क्या है जो ऐसे प्रैक्टिस कर पाए फॉर देयर इंटरेस्ट ऑल्सो एंड टू कीप इन माइंड कि दे कैन क्रैक ए गुड interview also. Obviously, I don't have any reference in companies like Amazon or Google. Is it possible in any way to get a reference in any chance? If you are someone who is in the field of IT and looking to upgrade yourself or looking for a good job in a good company, this episode is going to give you immense depth and immense knowledge. Today's guest, Mr. Dev, he has worked in companies like Microsoft, Amazon, and currently working in Google. We have talked every possible details how to land a job in Google if you're in the field of tech, starting from how you curate your resume to get selected in those companies, how you prepare, what are the topics you need to cover, how you're going to position yourself with the evolving AI technologies, every specific details we have covered. Even we have covered how you're going to get a referral from this company, which is very beneficial if you know if you're working in an IT company. So this episode is a no miss. Whether you are a fresher or having expertise in IT, wants to work in a fun company, this episode is going to give you lot of beneficial tips and tricks. The episode start in 3, 2, 1. Currently, you are working for the best company in the world. Right. What does it take to be placed in that company? Right. First of all, like, I want to say कि this company never has pre-criteria of you getting into IIT and those sort of stuff. Okay. Any tier 4, tier 5 colleges and college members can get selected into this. And if you want me ask, like, there are 3 to 4 primary steps how to reach these Yes. companies. Is first you have to prepare your mindset well, right? जनरली क्या होता है, लोग बाग सोच ही लेते हैं कि हाँ इट्स गूगल सो मेरा नहीं होगा. बट आई थिंक यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड सेट वेल, have some positivity in your mind, and then go for it. Okay. And once you prepare a good mindset, I think the second step, just follow with that, like seeing who are the person nearby you, right? Okay. Find that person who can help you in getting referral for these company, because I see there are a lot of resumes get rejected uh, just because of some mistakes or they don't have a referral and those sort of stuff. And I do reject a lot of resume just Okay. basis of that key, whatever the requirement is there is not matching with this. So I think those referral is very helpful uh, in terms of landing into an interview itself, right? All right. And then once you land into interview, you know, like, you have 2 or 3 months pending to give the interview for these company. Then you have to just put yourself 100%. Right now I know there are a lot of struggle, existing job का pressure है, a lot of environment pressure है, but just be focused on those 2 to 3 months, and focus as in like the tech part, whatever the opening is. So suppose SD role के लिए we ask DSA questions, data structure and algorithms, and we wanted to assess the problem solving skills Right. there. We don't want like very thoroughly code, very syntactically correct. No, how you approach to the problem is the main aspects, right? And then again, you once you get into it, like, your job done. Like, right now, like in these company, the second part, once you get selected, how you survive, Right. because there are a lot of competition in it.
like there are best of people in the Yeah. world in there, and how Yes. you going to get survive. So just have that positive mindset and do the good things. Mm. Do the work which you supposed to do it. So don't get that pressure wala stuff. Yeah, ठीक है. So the thing here is the resume part first. that's true. So currently I have heard a lot of things is ATS. That's true. It's an automatic system of scanning resume. But तुमने बताया कि you check resume by yourself. That's true. So So check resume by self, the filtered one. We don't okay, get all resumes. okay. So whatever the resume provided by the recruiters, the HR person, we Hmm. select those. Okay. But before reaching to us, recruiter do some searching at their level, which is something ATS just, right? So Hmm. वो एक internal query मारते होंगे, hey, can you give me this profile candidate, Okay. right? Okay. And ATS help them finding those profile candidate and come to us, because there are millions and billions of Profiles resumes in out the there. world, right? Yes, So yes. that's how it is, and that's Mm. how ATS is very important. Like we Okay. cannot uh, skip the ATS part of it. Mm. We should run, I think online there are a lot of checks. Right, They right. check ATS compliant and all. We do that check, and I would say like uh, even run through with whoever your uh, like referrer is. I think having a referrer is very important in Okay. these companies, Mm. especially because that gives a internal weightage Mm. to the candidate for Mm. sure. So yeah, use it wisely. So two things here. Yep. Let's say someone is into IT industry. Yes. So the first question is what kind of role, let's say you are in a lead position. So what kind of role you will be hiring especially under you as a lead? I mean, do you handle multiple roles, multiple technologies, or you are specific to particular technologies? So right now AI changing the world, Yes. right? So generally these companies never go for language specific stuff. Okay. So they look for a problem solving skills. So given the problem, how you going to solve that? How you going to approach the problem, right? So suppose I wanted to go to the Marathalli. Mm. You know the traffic is there. Mm. You know there are a lot of roadblocks are there. How effectively you can do? How you can find best X algorithm to reach it there? So Okay. generally people answer is, hey, I go with the normal route, Mm. choose this. That is something not expected by this company. So they hiring brilliant mind. They think about that how the given problem can be more optimized way solved. So you can say that, okay, can I pick a bus, Mm. or maybe can I take a quick ride, or can I find some shorter route to reach out there? So like this is the way we see that, like how candidate approach the problem. And once the candidate approach the problem, then the second part is like just do and write a code for it. Okay. Any language in Any that. language. Oh, lovely. So let's say you are hiring for your team. Yes. Let's talk about that. So what do you want someone to have a resume? What the someone's resume? What the skill sets he or she has to keep in order to pass the ATS and also to pass your special screening that goes through how their resume will get shortlisted in a company like Google. It depends on what experience you coming from. So Okay. if I talk about the fresher Mm. landing to a job, I think there we see some college constraint, right? So Google generally goes in IITs It there, goes. Okay. yeah, and there I think the first part they see it is data structure. I saw that people are using lead code reference. Mm. Hey, we have done the 500 plus lead code, Right. right? Code forces. A lot of the code community is there, so Mm. people do refer that, and Mm. it helps in ATS screening as well. Mm. If you talk about the mid-level engineers, like let's say you are in a like tier 3 tier 4 college, but still have a zeal to crack in this company, I think most of the audience going to be in Yeah. comes into this Yeah. category for sure. Yeah. I think there is two aspects. So we do ask system design pretty extensively. Okay. System design is saying like, hey, if you wanted to design a weather temperature system,
how you design that. Are you going to use the load balancer? You're going to use API gateway? You're going to use services at the end, or cache or database? What kind of database you're going to use? What kind of cache? So system in general, like the thinking, the holistic view of how you approach a problem and decouple problem into a system components, right? And the second part is again data structure and algorithms. So it's a must part. Like you might have 2 rounds of coding and then essentially 1 or 2 rounds for system design, and then one would be some sort of leadership where you going to be asked like that, hey, how, if your team member is not doing well, how you Okay. can help them doing well as and maintaining a team culture. So those sort of questions generally being asked. And I think these sort of stuff like system design, DSA, and the leadership skills should mention into a resume so that ATS can screen it pretty well like that. So total, let's say 4 to 5 rounds, 2 rounds of coding, 1 round of this System design. 2 rounds of coding, 1 round of system designing, Yes. 1 round is leadership Yes. quality. One additional round where it generally happen at the need basis is low level design. So low level design. Low level design. Okay. Yeah. So system design is first part where you think pretty holistically, saying that these are the services, these are the database. But low level design comes like once you design a service, what are the coding packages? Are you going to use interfaces, Okay. classes, like Okay. basic object oriented principle sort of stuff? Yeah. Okay. So let's talk about DSA first, then Yes. system design. Yes. Are they go hand to hand or they are separate entities? DSA and system design. I would say like both are different also And and connected connected as well. Okay. How they are different, like at least it is also like how individual pursue, and I'm just putting my thought is like when you approach a coding, right, you have a lot of things to cover, like the edge cases. Right. You have to see that algorithmic complexity, whether it's a n square, n cube or something, right? Time complexity. Time complexity, space complexity, Yes. those stuff definitely would be there, right? And then you just code it and run with the test case, and then interviewer generally gives some follow-up questions on there. Right. In the system design, like you have to gather the requirement, Right. and you have to be like partner your interviewer in that, right? So Okay. if you see that the different point in coding you are doing alone, just thinking loud, Right, saying right, that hey, this right. is a question, there could be some straightforward answers to it. Even your interviewer know about that, this can be solved with this particular optimized solutions, and this could be the one, right? But system designs, your approach is different. You just Okay. sitting with your interviewer, making as a peer and asking relevant questions, right? Suppose if I take our previous example of weather detection, you ask where like which city are you going to cover entire world? I think, and or maybe some part of city in Bangalore. What kind of uh, input devices would be there? It is a system like which is everywhere, or it would be a car who may be capturing the weather and giving to you like that way, right? So it goes bit ambiguous, and sometimes your interviewer also doesn't know the perfect answers to it. So Right. that is a different part of it. So what I found it is this same problem might have different approaches. Yes. We have to find out the value from optimization perspective and how well you can do it, how your expertise is. Correct. And the similar part of it, right? Like we talked about the different thing. The similarity is if you very high level um, think about that, you solving a problem. Even code, you deep coupling that, Right. right? You first identifying the one chunk of problem. Even the system design as well. You just dividing those problem into a sub chunks, like putting a service, then cache, then database. So Okay. that is a similarity I see it, but approach is pretty different in both things. Right. So
if someone wants to practice, let's say, DSA and system design, DSA के लिए what I know is lit code and or code basics something, they can practice few problems. But system design मेरे knowledge के हिसाब से I don't know कि ऐसा कुछ वेबसाइट है कि क्या है जो ऐसे प्रैक्टिस कर पाए, उसमें कुछ ऐसा है क्या जिसमें वो दे कैन प्रैक्टिस सिस्टम डिजाइनिंग स्पेशली फॉर देयर इंटरेस्ट ऑल्सो एंड टू कीप इन माइंड कि दे कैन क्रैक ए गुड इंटरव्यू ऑल्सो, क्योंकि आजकल बस बड़े कंपनीज दे आर नॉट आस्किंग, स्मॉलर कंपनीज ऑल्सो फ्यू टाइम्स दे आर आस्किंग, Correct. because startups they need Correct. a lot of things who can handle, they need a person who can handle everything altogether. Correct. So प्रैक्टिस कैसे करेगा कोई सिस्टम डिजाइनिंग स्पेशली? And I like this question very much. Uh, I got rejected in so many companies in system design round. यस यस And ऐसा feedback मिला है कि इसको कुछ नहीं आता है, like that Yes, way. because- And I relate this question personally in that sense. So जब मैंने start किया, like I think you start from zero. राइट Understand कि format क्या है system design का, right? And set the template कि okay, functional requirement है, non functional requirement है, capacity estimation है, high level design है, and then trade offs discussion है. This is what my template, Okay. people can follow it Okay. and maybe not. And how I reach to this template is the different part, right? So आजकल हमारे पास I think one of my favorite channel is Hello Interview sort of. उसमें काफ़ी breadth and depth cover किया हुआ है. There is a guy who's in Facebook and he prepares the material for others. So आजकल YouTube में I think there are lot of material available, but if the person is bookish, I think they can use LXU, System Design Volume 1, Volume 2. Those are good resources to start with. So once you have a foundation ready, foundational knowledge, I think then you can do the mocks with the experienced persons. Yes. So there are a lot of portals which give us the paid interview, and if you get any query, guys, just follow me. I'll do for free, just to contribute to community. Okay. But just experienced folks, reach out to them and get that key. Am I doing the right thing? Just to validate those things. I think sometimes people make a mistake, and which I did as well, is just reading this. So it is a plethora of things. Information. You can't cover everything. Correct. है ना? So एक फॉर्मेट में चलो और जो आपको नॉलेज बिल्ड करते चलो. एक अच्छी बुक भी है DIDA करके, डेटा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, उसको पढ़ो, उससे फाउंडेशन रेडी होता है. एंड देन आपके पास फाउंडेशन रेडी है, आपके पास टेम्पलेट रेडी है, देन ट्राई टू अप्लाई इन अ नॉर्मल प्रॉब्लम एंड जस्ट कंसल्ट विथ योर सीनियर इंजीनियर्स जो आपके पास नियर है, अप्रोचेबल है, एंड देन कोर्स करेक्टेड दैट, लाइक दैट वे. सो ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो. नाइस नाइस. अभी बात करेंगे AI से. How much has been AI taking care in a daily job role currently you are working? The company you are working is also providing AI services, and one of the great AI company itself, and one of the great data center it's building, a lot of things it is doing. So what you especially doing, or maybe if someone wants to get into this field, at least knowledge wise, I understand ki when they are doing system designing they have to cater all those optimization technique and all, but AI कहाँ पे आता है exactly in this particular case? क्या वो जैसे कोड कॉपी कर सकते हैं? क्योंकि if you go to AI also, not every time you get optimized one. If you have paid version, maybe sometimes, but you have to twitch a lot on top of it. और क्या मैं जो AI समझता हूँ कि दिस इज ए ChatGPT और Gemini, क्या यही AI है कि उसके अलावा AI is a topic that less people knows and they should be aware कि इसी रास्ते पे प्रिपेयर करेंगे
तो we'll have a better options to go to in terms of job. I'm talking about why I'm saying asking this question. I have seen many YouTube videos who says you learn prompt engineering, you will get a high paying role. But my perspective has been always ki prompt engineering cannot give you a job. I Yeah, might be wrong, but I don't true, know. actually, yeah. So now those people are saying कि context engineering will be a thing. But how? Context engineering almost a kind of prompt engineering, isn't it? आपको थोड़ा डिटेल में चीज़ देना पड़ेगा तभी वो समझेगा उसको. So उसके just set a light की what actually happens if someone wants to get into the field of AI itself. In terms of job, आप normally तो कोड कर सकते हो, but job के लिए क्या कैसे होगा? Correct. A lot of Yeah, a lot of misconception, myths. like Hmm. prompt engineering, right? Yeah. It's a plain English, and it's going to evolve that much. Hmm. Maybe AI तो ऐसा चल रहा है कि you don't need to give prompt on also, Exactly. right? Uh, how far AI will go? Um I think definitely AI will go very far, and there is a must. We all need to learn AI, Hmm. and now definition is what we'll learn in AI. Hmm. I think one of the critical thing which AI is provide, or maybe AI foundation framework is provide to build agent, Agents. right? Okay. So let's take ATS example itself. Okay. Can we automate Hmm. your resume upload to the LinkedIn with ATS compliant with AI? I think Okay. that is what something we need to solve it, and that can solve using AI and AI agent, है ना? So आपको prompt देना पड़ेगा कि hey, go to a LinkedIn Hmm. and upload my CV. Then आपको workflow बनाना पड़ेगा Hmm. which executes every day or every 2 days, right? Okay. वहाँ पे AI की expertise काफ़ी है ना? Instead of आप prompt learn कर रहे हो, I think start using AI will give big leverage in terms of just I would say learning some sort of short techniques of giving prompt, hey AI, can you build my image or something sort of stuff. Identify the problem Hmm. and try to use, or maybe identify the manual problem and try use AI to automate that, Hmm. right? And in the process of automating it, you will face a lot of AI framework, a lot of AI technology which is relevant to solve that, and which is what in other companies also expect, Hmm. right? So we have a scikit-learn library in ML, Yes. right? Yes. Yes. Python scikit-learn. Yes. So we have Gemini Data Studio. Gemini Data Studio. Yeah, and we have bunch of other tools are available to do very similar sort of stuff, like to automating this stuff. Okay. So AI तो सीखना पड़ेगा, Hmm. and सीखने के साथ साथ हमें AI को use भी करना पड़ेगा as a automation. That's only the way you can. So someone, let's say someone is starting into learning, let's say different field. मेरे ही बात करते हैं, let's say I am into data engineering aspect. मुझे पाइथन आता है, पाइस्पार्क आता है, पांडास आता है, क्लाउड में लेट्स से आई नो फ्यू सर्विसेज ऑफ AWS, but AI aspect I haven't explored yet. So shall I start with scikit-learn first, or shall I start with calling an API which handles LLSA, ChatGPT LLM का API call करके I need to MCP server हाँ बना के MCP you can server call बना it. के shall I do that, or I shall clearly focus on this scikit-learn, let's say आपका LangChain आता है जो LangChain कि is there. वेक्टर Yes, डाटाबेस, correct. वो सब में ज़्यादा फोकस करना चाहिए. I think जो मुझे लगता है, I think foundation आपको पता होना चाहिए. Right. I mean foundation होने से how an LLM model works. That's correct. especially. Okay. How LLM works and how to build that and when to build that. सारी प्रॉब्लम LLM से सॉल्व नहीं हो सकती है. Okay. तो आई थिंक यू शुड बी एट राइट प्लेस सेइंग दैट कि नहीं, ये AI से सॉल्व नहीं हो सकता है और ये AI से सॉल्व हो सकता है, लाइक दैट वे. Okay. तो
फाउंडेशन ऑलवेज हेल्प्स, एंड वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। मुझे हम्म। लगता है कि इतना फास्ट हो गया है, लाइक यूजिंग साइकिट लाइन लर्न लाइब्रेरी यूजिंग पाइथन कोड इज जस्ट you just do it in 10 minutes, Okay. and you can understand that. Obviously don't go into that maths calculation Yeah, form that's because it's already built like that way, but एक अपर लेवल पे पता होना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक companies that has fired employees because of AI are hiring more employees than they fired. It's because the code that is being written by AI to solve and to put in a production grade environment, that code that has been created, it's taking more human effort. तो ऐसा एक रिपोर्ट है कोई मैगजीन का या फिर कोई न्यूज़ चैनल का कि कंपनीज आर सीक्रेटली हायरिंग मोर इंजीनियर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. डू यू थिंक दिस कुड बी ए केस गोइंग फॉरवर्ड? I think that's an interesting one. हाँ. And I would like to see that report offline. uh, Definitely AI से engineers की requirement कम तो हो रही है, Yes. and that is a truth. True. We can't deny with that. है ना? Now we need more efficiency from the engineer, and to enable the efficiency, they need to use the AI for sure. So it is good. If report is saying this, and I just say that yes, I like the report very It's a good much. thing. It's a good thing. हमारे पास और jobs आएंगी. हाँ. But the fair thing जो हमें करना चाहिए, Hmm. हमें चीज़ें लर्न करना चाहिए. I think this is a very very right time Hmm. जहाँ पे AI ने completely replace नहीं किया है humans को, Right. and partially on verge of doing that. So अभी हम AI का कर लेंगे, Hmm. तो eventually हम we ended up Hmm. I identify the right problems, solving those problems, and use the AI to execute it like that way. So हमें use करना ही होगा AI. I think AI is a future for sure. Yes. And maybe वो report का reference ऐसा हो सकता है, और maybe one of the specific instances में ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने फायर कर दिया हो and they realize कि नहीं ये AI से गलत हो रहा है. बट जो ब्रॉडर मैं देख रहा हूँ अक्रॉस ऑल द फर्म्स, पैटर्न यही इमर्ज हो रहा है कि जो काम हम 4 हफ्ते में कर लेते थे, Correct. वो आज 1 दिन में हो जा रहा है. सो इसका क्लियर इंडिकेटर है कि नाउ हमें लेस इंजीनियर्स चाहिए जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते वाले काम. सो अगर कोई एक पर्सन या कोई भी एक जो इंटरेस्टेड है इन टेक्नोलॉजी will have a great leverage if they can understand the logic behind how things work. Things work in the sense especially how AI works. अभी के लिए AI हम जब बोल रहे हैं तो LLM मॉडल्स को ही रेफर ज़्यादा करता है. तो कैसे काम करता है, क्या करता है. सो अगर स्टडी करना चाहे कोई ऐसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज इस चीज़ को, क्या यूट्यूब सफिशिएंट होगा या फिर कहीं से कोर्स कर लेना ही बेहतर होगा या फिर कुछ बुक्स फॉलो करना बेटर होगा? फ्रॉम ए जॉब पर्सपेक्टिव ऐसे तो बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं, लेकिन जॉब पर्सपेक्टिव से क्या सही रहेगा कुछ? तो मुझे ऐसा लगता है कोर्स कर लेना चाहिए, एंड कोर्स कैन बी डिपेंड ऑन कि वो ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है. सम कोर्स ऑफर लाइक कि 1 साल में हो जाएगा 1.5 साल में हो जाएगा. आई थिंक कर लेना चाहिए हमें, और इन पैरेलल हमें जो ऑनलाइन मटेरियल है उसको भी पढ़ना चाहिए. सो मतलब देयर इज नो स्ट्रेट आंसर कि इज दैट मेरे हिसाब से कोर्स के साथ देन ऑनलाइन रीड, और आई थिंक बुक्स आर आल्सो प्रीटी गुड वे ऑफ रीडिंग इट. सो बट यस द इंटेंशन इज कि हमें टारगेट करना चाहिए कि नेक्स्ट 8 to 10 months में हमें AI अच्छे से आ रहा है. एंड अगेन फॉलो बैक टू द प्रीवियस कन्वर्सेशन कि हम कैसे उसको ऑटोमेट कर सकते हैं.
मतलब आई use फील कि cases. लर्निंग इज वन पार्ट ऑफ एआई, बट जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे देन देयर इज नो पॉइंट करेक्ट, एक्चुअली. आपको यूज केसेस बनाने पड़ेंगे एंड दैट्स ट्रू. खुद को ही प्रोडक्शन में लगा के खुद को ही टेस्ट करके खुद को ही इम्प्लीमेंट दैट्स ट्रू. करके देखना यस. पड़ेगा. यस. एंड मुझे लगता है ये एक्सरसाइज मे बी डे वन से हो जाती है कि आप एआई सीख रहे हो एंड आप उसको यूज कर रहे हो. मतलब आप नहीं, यदि आप फाइनेंशियली सही नहीं हो तो आप मत करो कोर्स. आप कोई भी एआई का मटेरियल लो, देयर आर लॉट ऑफ फ्री कंटेंट अवेलेबल यस यस. एंड स्टार्ट यूजिंग इट. तो जो प्रैक्टिकलिटी जब आ जाती है ना, तो इवेंचुअली दैट पर्सन हैज वेरी स्ट्रांग मसल ऑफ क्रैकिंग दोज इंटरव्यू, बिकॉज यूज केस इंटरव्यू में ऐसे ही पूछता है कि हे, इफ यू वांटेड टू बिल्ड स्मार्ट सिस्टम एट योर होम जिसका डोर ऑटोमेटिकली एआई से ओपन हो जाए, हाउ यू बिल्ड इट. तो यदि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज है देन यू कैन से दैट कि हाँ, मैं एक एलएलएम मॉडल बना दूंगा, उसको ट्रेन कर दूंगा इस पर्टिकुलर डेटा पे एंड इंटीग्रेट कर दूंगा मेरे हार्डवेयर से एंड आई विल गिव द कमांड एंड दैट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, राइट. सो आई थिंक आपको यूज करना चाहिए. यूज केसेस ज़्यादा बनाने पड़ेंगे. यस. they predict that कि businesses, lot of businesses will be built, solo businesses will be built on AI because agents के वजह से बहुत सारे चीज़ automated हो जाएंगे and going for, I think Sam Altman का एक इंटरव्यू था, going for a lot of billionaire entrepreneurs will be solo entrepreneurs, but let's not get into हाँ, मतलब अगेन लाइक अभी क्या है, सभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज अ फ्यूचर, बट मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमन वी विल बी मोर एफिशिएंट. तो एआई हमें एक टूल होगा जिसको मैनुअल से ऑटोमेट पे करेंगे, बट प्रॉब्लम स्टिल बी देयर, है ना. तो एक इंजीनियर का रोल हो जाएगा कि यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, you think about how to solve the problem, which is a system design, and then use AI to execute it. Like write a code and then you make some human intervention, make it more efficient on production पे deploy कर दो, like that way. But I think वो top step 1 and step 2 is always remain the same. AI कभी problem नहीं बता पाएगा, तो वहाँ we as a engineer can excel कि इस problem, ये है problem एंड ये है पोटेंशियल हाई लेवल सॉल्यूशन. लेकिन अब बात करते हैं, हाउ डिड यू गेट इनटू गूगल स्पेशली, एंड आर यू फ्रॉम ए टॉप कॉलेज और टॉप सिटीज, व्हाट इज योर जर्नी, जस्ट टेल अस so that someone, if someone watching and they want to land a job with the biggest company of the world, they can follow. Correct. So मैं टीयर 2 सिटी से हूँ. मतलब मैं भोपाल से आता हूँ, एमपी से, और हमारा जो स्कूल होता था हार्डली 10 लोग होते थे उसमें, एंड इवन कॉलेजेस भी जो मेरा था, लाइक इट इज़ वेरी हम्बल बैकग्राउंड आई केम फ्रॉम, राइट. एंड वहाँ पे लाइक ये कंपनी आती भी नहीं थी, जस्ट अ ड्रीम फॉर मी, राइट. बट हाउ आई ट्रांजिशन इनटू दिस इज कि वन ऑफ माय सीनियर in JP Morgan Chase got selected in Amazon, right. तो आई थिंक जब वो होता है ना, आप आसपास के लोगों को देखते हो और आप इंस्पायर होते हो उनकी स्टोरी से, तो आई थिंक दैट इज अ डे वेयर यू स्टार्ट ग्रोइंग, आई फील इट. सो मैं उनसे मिला, लाइक आई लिटरली कैश्ड हिम. सो वो जा रहे थे, सिटी चेंज कर रहे थे, मैंने उनको बोला मुझे आपसे 10 से 15 मिनट चाहिए. तो एंड दिस इज अ थिंग यू नेवर नीड टू शाई अबाउट इट कि यार वो इतना बड़ा आदमी बन गया है और उससे बात करना है, तो आप उसको पकड़ लो, बिकॉज इट इज योर थिंग, राइट. सो मैंने उनसे पूछा कि हाउ यू अप्रोच इट. सो आई रिमेम्बर कि द फर्स्ट सेंटेंस ही सेड कि यार तेरा नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से होएगा. Oh my God. एंड इट वाज राइट एट द मोमेंट, राइट, कि टाइम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो चेंज होता है ना, बदलती है. अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. उस समय थोड़ा बुरा था क्योंकि हमें आता नहीं था. सो एंड सम पीपल टेक इट एज वेरी नेगेटिव कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है.
देन आई आस्क फॉलो अप क्वेश्चन कि आपको क्यों लगता है ऐसा कि नहीं हो पाएगा. देन ही सेड कि यार हमें ये करना होता है, ये डीएसए है जो तूने शायद कभी लगाया नहीं होगा, और तेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, राइट. सो एंड कम्युनिकेशन इज अ मेजर पार्ट, राइट. आप इवन सॉल्व कर रहे हो, सो दे एक्सपेक्ट यू टू थिंक लाउड. आप टाइप करते हुए कोड लिख रहे हो एंड स्टिल यू हैव टू स्पीक इट in that sense कि हाँ the people can understand, right. Then I said that okay, मैं आपसे 3 महीने बाद बात करूँगा with the road map और जो मैं अपने आप पे काम करूँगा in these things. So then I met actually after 3 months. I did all hard work, like मैंने उस टाइम पे लीड कोड के अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस लगाए थे. अगेन आई काउंटिंग दैट कि हाँ आप एक दिन 2 क्वेश्चन लगा रहे हो एंड देन रिवाइज कर रहे हो. तो वो 60 क्वेश्चन ऐसे थे कि लाइक आप आंख बंद करके भी पूछोगे तो आई कैन टेल द आंसर्स टू इट. देन ही सॉ द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. देन ही सेड देव लेट्स टेक 6 मंथ मोर. ठीक है ना, आई एम गोइंग टू रेफर यू कि मैं हेल्प करूंगा. So that is a framework, like when people see your growth and they see like कि आप कैसे feedback को receive करते हो, I think they see some spark in you, and वो help किया मुझे. And literally उन्होंने मेरी help करी and उन्होंने first referral दिया मुझे and I got selected in Amazon. First attempt मैं select हुआ. Oh my goodness. So it was amazing, right? Yeah, and you sounds amazing. So yeah, it absolutely feels you won't amazing. believe कि माइक्रोसॉफ्ट में तो मुझे कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं गई. लाइक आई जस्ट मैं यहाँ पे मुझे याद है कि मैं सैटरडे ड्राइव हुई थी, मैं डांस क्लास से गया था, 6 बजे इंटरव्यू हुए थे एंड देन आई थिंक संडे आल्सो दे कंडक्टेड इंटरव्यू एंड आई थिंक वेंसडे जब मैं पार्टी कर रहा था टीम के साथ तो मुझे रिजल्ट मिल गया एंड इट वाज पॉजिटिव एंड द गुड पोजीशन दे gave me actually. It was a principal role. And that guy who referred me in Amazon eventually ended up in Google. Okay. And recently we met also. So I think it is all about destiny and it is all about how you work. Even that doesn't matter which city you come from, which college you comes from. It's just like keep that perseverance, like कि यार करना है, मतलब आप फेल हो गए. Like Google was my third attempt. I could have given up in first and second कि यार होता नहीं है. And first was like कि मैं second interview में ही कि नहीं होगा. But yeah, eventually it ended. So हार्ड वर्क करने की माइंडसेट सबसे पहले होनी चाहिए. That is very very important because working in a 9 to 5, having a family and working on your dream is not a small task and not everyone's cup of tea, I would say. It's very very difficult. यहाँ से one more thing, you said referral is a very important aspect to get at least interview in these companies. Let's say I don't have any reference in this, or maybe I don't have any reference in companies like Amazon or Google. How difficult it is going to be, or is it possible in any way to get a reference in any chance? I think yes, that's a good question कि मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, है ना, mostly. But I think हमारे era में LinkedIn ने ये काफी approachable बना दिया है. Okay. So suppose आप Amazon में select होना चाहते हो या जो भी है, I think you just select Amazon in LinkedIn. Okay. You get thousands of profile, right? And try to reach out. Maybe 20 में आप बोलोगे connection request भेजोगे, 10 will accept, है ना, and eventually 2 reply करेंगे. तो दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, और वो हेल्प करते हैं. तो आप ये थॉट प्रोसेस मत रखो कि मेरा कोई नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है. गो इन अ पोर्टल एंड ट्राई टू सर्च एंड जस्ट ट्राई टू गेट हेल्प. आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा. वो 20 में नहीं हुआ, अनदर 20 ट्राई करो, बट जस्ट कीप ट्राइंग. आई थिंक लिंक्डइन हेल्प अ लॉट. हमने बहुत पहले, इफ यू रिमेम्बर और नॉट, एक टोमेटो आईओ ऐसा कुछ बताया था, वेबसाइट
Does that still exist? Does this help in any way? Which one? Tomato Tomato.io या Tomato.io? top mate. Topmate.io. Yes, 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 it is yes. there. It is there. Yeah. It is helpful. It is very helpful और वो इतना कॉस्टली भी नहीं है. Okay. आई थिंक प्रेपफुली इज अ टूल जो काफ़ी कॉस्टली है, $100 ले लेता है, बट आई थिंक टॉप मेट ऑल्सो हेल्प करता है, काफ़ी हद तक हेल्प करता है. सो यू गो एंड फाइंड अ match there, schedule a call, and then you can just get together and like that way. That is also one of the greatest way to reach out people for a referral and other aspects. Nice. But it's just that again comes to that mindset कि यार मुझे होना है तो if you take start, eventually it gets end. Yes, you have to keep doing same thing again and again. for, Yes. till the time you. हाँ, और आपको स्टार्ट करना होगा. मतलब आप ये Yes. सोचोगे कि यार मैं एक हफ्ते बाद करूँ, 2 हफ्ते बाद करूँ, तो इट नेवर स्टार्ट. Yes. मुझे लगता है जो चीज़ स्टार्ट होती है जब आप भेजते हो, 2 लोगों का रिस्पॉन्स आता है, तो वो स्टार्ट हो गई है. एंड समहाउ यू going to get end to that, eventually ending up referral and those things. गूगल में मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस की वो स्लीप पॉड देते हैं टू स्लीप एंड दे हैव वेरी नाइस फूड दे कैटर. तो क्या प्रोज कॉन्स होंगे तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि सबके अलग अलग देखने का नज़रिया अलग अलग है. सो क्या प्रोज रहते हैं स्पेशली और क्या कॉन्स है, क्योंकि सारा चीज़ तो अच्छा नहीं हो सकता किसी में भी. पुट ए लाइट ऑन इट. या तो सबसे पहले प्रॉस की बात करते हैं. सैलरी ठीक ठाक है, सैलरी अच्छा है करेक्ट, एंड अवेलेबल भी है गाइस. level.fyi आई थिंक दैट्स अ साइट, वहाँ पे आप देख सकते हैं. level.fyi. हाँ, levels.fyi. मैं लिंक डाल दूंगा. Yes. जिनको सैलरी देखना है गूगल Correct. कितना पे करता है. करेक्ट. सेकंड इज द बेस्ट इंफ्रा, राइट. आप Yes. अनंता ऑफिस जाओ, यू विल लाइक अमेजिंगली, लाइक वहाँ पे कैफे है, बरिस्ता कैफे, जहाँ पे आप कुछ भी कॉफी कुछ भी कर सकते हो, लाइक इट्स ऑल फ्री, राइट. फूड इज द बेस्ट. मतलब इवन मुझे तो ऐसा होता है, मैं किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ तो मुझे पसंद नहीं आता है, बिकॉज आई हैड गूगल का खाना. एंड मैं इसको थोड़ा बढ़ा के नहीं बता रहा हूँ. इट्स आप सारे जो गूगलर्स हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हो. इट इज़ द बेस्ट फूड. सो वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, लाइक फॉर योर हेल्थ, कि खाने में ज़्यादा शुगर नहीं होना चाहिए, palm oil नहीं होना चाहिए. सो दे डू सम टेस्ट ऑल्सो फॉर द फूड. यदि आपको फूड अवेलेबल वाला नहीं खाना है, देन यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ फूड फॉर यू. सो रॉ मटेरियल्स भी रखे होते हैं, राइट. सो एंड हर फ्लोर पे एक माइक्रो किचन होता है, जहाँ पे आप ड्रिंक्स, काजू और ये सब आप स्नैक्स ले सकते हो. सो दैट इज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ फूड. सो दे ट्रीट यू एज they give you as a luxury lifestyle, and also it's like once you get used to this kind of culture, correct, you will not like anywhere else. you started dislike your normal life. कि जैसे मुझे पहले बहुत मजा आता था कि जब मैं बाहर खाना खाने जाता था. राइट नाउ मैं हर दिन एक अच्छा खाना खाता हूँ, तो आई डोंट एंजॉय इट. मतलब मेरे लिए वो नॉर्मल हो गया है खाना, कि यार मतलब मैं वो उतना एक्साइटेड नहीं होता हूँ कि हाँ मुझे एक वो अच्छा है. द डे व्हेन आई जॉइंड, आई लाइक गाजर का हलवा, बाय द वे. सो पहले दिन ही गाजर का हलवा दिखा, एंड इट वाज सो डैम टेस्टी कि आई फॉरगेट दैट. गूगल छोड़ो, हलवा खाते हैं. करेक्ट. तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट. इन टर्म्स ऑफ कॉन्स, आई थिंक हमने ये बात भी करी है कि you all working with your best talent in the world, right. It's they have very strong strict hiring process, कि bad hire तो आएगा ही नहीं, ये मान के चलो. and they all are brilliant, like आप नहीं करोगे कोई और करेगा, और आपसे बहुत बेहतर करेगा. so
that gives a repercussion of like burning your life a bit, like कि you always feel कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूं, Right. है ना. तो थोड़ा सा है, प्रेशर है, Mm. एंड द वर्क प्रेशर इज देयर बिकॉज ऑफ दिस. सब अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैनेजर से कि ये करना ही है करना है, बट आपको ही ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट इज देयर कि हाउ आई कैन गिव माई 200-300%, राइट. एंड गूगल लॉट ऑफ इंटरनल टेक्नोलॉजी भी फॉलो करता है, तो यू हैव टू इवेल्युएट कि आप बाहर जाओगे तो व्हाट आर द अदर टेक्नोलॉजी यू नीड टू लर्न साइमल्टेनियसली टू रिमेन वैल्यूएबल फॉर आउटसाइड एज वेल. कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट इज डिफरेंट, लाइक सपोज एआई है, सो गूगल का इंटरनल एआई है, राइट, बट यू स्टिल हैव अ क्लाउड ए चैट जीपीटी एंड ऑल, राइट. तो आप बाहर जाओगे तो आप उसको कैसे, बट या इट इज द थिंग which I won't say is a pros, but continuous learning and just keep sync with the outer market is one of the things I feel Right. can be the pros. मूवी है इंटर्नशिप करके, That's true. उसमें देखा हो क्या? Yes. that shows lot of things about Google especially. Correct. वो इंटर्न करने जाते हैं. Correct. So if you want to watch, you can watch to know more. So that is an internship. That is an internship. And interns की बहुत वैल्यू करता है, Hmm. राइट. सो हमारे इंटर्न्स आने भी वाले हैं नेक्स्ट मंथ. सो यस, आई थिंक जो मूवी में दिखाया हुआ है it's Almost accurate. almost equivalent to that, right. Obviously like थोड़ा movies में मसाला भी लगाते हैं, Obviously. not like the meeting design code and those aspects, but yes, those are still be there. Nice. ठीक है. I think Thanks. हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें किया है ना? Thanks. कोई अगर नॉर्मली देखेगा उसको, एटलीस्ट कोई जॉब सर्च में है, It helps. It will be. I mean, it helps to crack a FAANG company. Correct. What else they do need? They might end up a job in the biggest company in the world in Correct. the field of their own. Correct. है ना? And like बहुत सारी like just to be end thought here कि don't get disappointed. मतलब मुझे लगता है फांग का रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है. They do reject lot of candidates. So don't get demotivated with that. Lot of other companies equivalent to Fang or maybe beyond that, they paid well, they have a good lifestyle and all. Yes. So if you don't get Fang, don't worry about it, man. Just relax in life, just do good things and try to get other companies, right? I mean, अगर आप FAANG के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो, if you not get selected in those companies also, the knowledge that you will have will be more than sufficient to rely a job in any big company and a good pay, because the That's preparation itself will be so good. That's true. And like it gives you like how to deal with failures, Yes. how to be consistent, what kind of perseverance you have it, and these are the सॉफ्ट स्किल्स जो होता है वो हम नॉर्मली नहीं सीखते हैं. बाय द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन हम सीखते हैं, और मुझे लगता है वो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी काम आती है. आप कोई भी काम करो उसको लगन से, मेहनत से, ईमानदारी के साथ करोगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे. सो just wanted to cover. Yeah. With that note, thank you. हम और भी एपिसोड्स करेंगे. बहुत you, करेंगे क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है और ये टाइम बहुत कम है. बिल्कुल. sure. हमने बहुत लंबा बातें किया है. थैंक्स फॉर हैविंग मी. ऐसा नहीं कि घटिया बातें की बहुत अच्छी बातें किया है, लेकिन हम और भी बात करेंगे. sure. करना चाहिए हमें. डिटेल में हम बात कर सकते हैं. बिल्कुल. किसी भी टॉपिक में जो हेल्प करे. बिल्कुल. अगर लोग कमेंट करते हैं कि किस टॉपिक में हमको बात करनी चाहिए, हम guys, like if you want us to be talk about any topic, drop कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए, किस if you see that कि हाँ कंपनी रिलेटेड हमें बनाना चाहिए तो हम उसके बारे में बात करेंगे and to get you succeed. Thank you.